Let's take another application. ये सब समझ में आ रहा है गुराशीष? Yes. Another application is flotation. Okay. So whenever a body is kept in a liquid, तो उसके साथ तीन चीजें हो सकती हैं गुराशीष. Okay. What are the situation? So suppose we have a container. यदि हम इसमें एक सॉलिड को रखते हैं तो वो जाके ग्राउंड पे इस तरह से सेटल डाउन हो जाता है. यदि रो डेंसिटी इसका है और डी डेंसिटी इस सॉलिड का है, तो हमें इस सिचुएशन में पता है कि इस सिचुएशन में जो होगा ये सिंक कर जाता है, मतलब बॉइंड फोर्स इज लेस देन मास. वेट से कम होगा बॉइंड फोर्स, तभी वो सिंक कर जाता है. Yes. सो बॉइंड फोर्स जो होता है वो होता है वॉल्यूम into density of is less than VdG. तो VG मतलब रो is less than D. जब भी ऐसा होगा तो सिंक कर जाएगा. Yes. Then we have a situation जहाँ पे ये just अंदर सिंक कर जाएगा लेकिन फ्लोट कर रहा होगा. So the condition for flotation is mg is equal to fp. This is the condition for flotation. Right. It will be balanced by the buoyant force. So in this situation, I can write V rho G is VdG. So I'll get rho is equal to D. In the third situation, it might float with some portion above the liquid. Right. So in this situation, again, mg is greater than, mg is equal to buoyant force. Right. Here also mg is equal to 0.4. Here also mg is equal to 0.4. But the difference this time is that कि इस बार volume submerged जो होगा वो कम रहेगा. So I can say V dg is volume submerged into dg rho. Right. So this gg gets cancelled out. Since Vs is less than V, this implies that D is less than rho. क्योंकि दो चीज का मल्टीप्लिकेशन यदि कांस्टेंट है तो एक चीज कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा. Yes. Understood? Yes. So but इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि Vd is Vs into rho. Right. ठीक है. So let's take question. Question is that we have a liquid. And on that liquid there is a block floating. This is the cube and this is floating. Yes, this sir. is water. ठीक है. डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर. इसके ऊपर जब एक ब्लॉक रखा जाता है इस ब्लॉक के ऊपर तो इट जस्ट सबमर्जेस. दिस मास इज 12.5 kg. Find the side, find the length of side of cube. इस क्यूब के साइड का लेंथ क्या होगा? ये इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक is 0.9. Let's see. So I can write that in this second situation, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये लग रहा होगा 12.5 into 10 न्यूटन. इस पे जो फोर्स लग रहा होगा पॉइंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ और इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा. So ये तीनों बैलेंस होने चाहिए. So we have 12.5 plus 125 plus mg. mg की जगह पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, that is a cube into density, that is 900 into g, that is 10. ठीक है. This is equal to fb, buoyant force. So buoyant force is volume, that is a cube into density of liquid, that is 1000 into g, which is 10. So we have 125 as 10 a cube को बाहर ले लेंगे and this is 1000 minus 900. So 125 is 10 a cube into 100. So we have 125 by 1000 as a cube. So we have 5 by 10 cube is equal to a cube. So a is 5 by 10 meters.
तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर ये